Hello and welcome to Wise IAS Academy. I am a Indian polity faculty. So we have started the salient feature of Indian Constitution, right? And we will continue from here. Okay, fine. Simple majority, special, absolute भी हो गया, effective भी हो गया. Okay. Special majority. So special majority is basically for the amendment of the Constitution. Why we need an amendment? So the first question is this: why do we need an amendment in the Constitution? Society cannot be remain static. Okay? The only principle that society follows is the principle of change. Okay? This is the common element in the society, every society. Okay? Fine. The society needs to change itself. For that reason, if the society is guided or driven by any particular constitution, so it is very important that the constitution should be flexible to move. And that flexibility should not be like that. Those conditions. Either you have a very flexible constitution or either you have a very rigid constitution. Now, there is a problem with both. Okay. Now, in the case of flexible constitution, what happens when there is too much flexibility in the constitution? The constitution itself becomes dysfunctional. ठीक है? जैसे कि जितने भी mostly, but the majority of the countries after the Second World War, the countries got independent in Asia and Africa. Okay, Asia and Africa was the colonies. When they got the independence from the Europeans, okay, most of the country turned into a dysfunctional. Many of them made their own constitution, but most of them turned into a dysfunctional constitution. Why? There was two reasons. Either the constitution was too flexible to be amended. When the constitution is too flexible to be amended, what happens in that case? There is a very frequent change in the constitution. When there is a very frequent change in the constitution, what will happen? The provisions of the constitution, maturity of the provisions of the constitution does not take place. ठीक है? Majority जो होती है provision को implement करने के लिए, right to equality. What is the majority? Maturity of a constitution. Right to equality has been enshrined in the constitution. ठीक है? अब ऐसे तो है नहीं. At the time we got a constitution, right to equality. ठीक है? At that very time, the provision becomes very mature, and people started adopting it. ठीक है? It take a long time. Still, we are struggling with that provision. Provision of Article 14, provision of Article 16, 15, provision of Article 17. ठीक है? आज भी struggle कर रहे हैं हम. Okay, we are still struggling, and we are not able. There is a maturity. There is a maturity is going on. Okay, if you see 50, 60 years back, or you can say before independence, or not more than a century back. Okay, do you ever imagine the boy and a girl will sit in the same room and study? That is not practical, because that was the culture of Indian society, not particularly Indian society. That was basically a culture throughout the society. Throughout the society. So you should be remembering that at times it happens. The constitutional provision needs to get mature. Okay, it takes time to get maturity. When there is too much flexibility in the constitution, flexibility, I have told you, very simple way to amend the constitution. Very simple procedure to amend the constitution. When there is very simple way to amend the constitution, it is very easy for a small number of group change the constitution. Okay? In that case, what happened? That case, the constitutional provision does not get mature and it becomes dysfunctional. Now, there is a problem of rigidity also. When there is a rigidity, most of the cases, what happens when there is a rigidity in the constitution, it happens to be having a military coup. You know military coup? Yes, sir. कहाँ हो रहा है अभी? म्यांमार में क्या किया अभी लोग recently? What happened very recently? मिजोरम वाले चिल्ला रहे, क्यों नहीं आने दे रहे? मिजोरम गवर्नमेंट भी कह रही है.
मनरेगा की स्कीम में भी उन्होंने कह रही कि पहले कह रहे थे 3 दिन पहले कह रहे थे अभी तो आज की या कल की बात है कि मनरेगा में उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं थे तो बाहर से हमारे यहाँ पे इतने अनएम्प्लॉयमेंट में जरूरत क्या मनरेगा में देने की? म्यांमार से हमें कोई फायदा नहीं है। आगे म्यांमार से है थोड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उनके पास। अच्छा, one thing that is okay. The recent was the military has opened fire on the civilians protesters. That is being condemned by the more than 20 countries. Okay. So when there is too much rigidity in the constitution, it happens that it becomes a military coup. Pehla. Dusra, there will be a huge protest by the people. And the people will try to overthrow the government. Okay? That is too much of rigidity. Now, in this case, what happened? India is a perfect blend of both. Okay? It is having a good blend of some rigidity. Wherever the rigidity is required, it is rigid. Wherever it is required a simplicity, flexibility, there is a simple provision. Basically, now try to understand the internal reorganization of the states. Is it a matter of a center or it is a matter of a state? No, it is a matter of center because we do not have the federal structure. I have to achieve. The state has not come to make a center. Okay? The center has created the state for the administrative convenience and to give that cultural diversity to the nation. Okay? For that reason, we have created the state. So, to create a state or to abolish the state, it has a very simple provision. Because that is the center matter. So, it is very flexible in that case. You can simply by simple majority you can amend. Even in the case of citizenship. Okay, in the case of citizenship, it is a complete prerogative of center. So there is no point of having the say of the state. Okay? There is no point of having a say. Now there is a question on this. When citizenship amendment bill has passed, okay, many state governments, state legislature has passed a resolution not to implement it. Okay? Supreme Court recently has judgmented that whether such resolution is valid or not. Okay? There was a plea on that. Okay? Supreme Court judgmented that the resolution to pass a resolution is a right of the state legislature. And it does not have any impact on the implementation of the act of center. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, वो उनके पास राइट है, they can pass a resolution whether to implement or not. If they are not implementing that particular thing, then the center will take an appropriate action on that. ठीक है, right? So this is how the rigidity is built. Now this is one important element of rigidity is when there is a distribution of power, when there is any amendment to the distribution of power between center and state, that is a federal structure. ठीक है, अगर वहां पे हमें कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए. जैसे कि जीएसटी लाना था हमें, तो जीएसटी इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ फेडरल अरेंजमेंट. ठीक है, जीएसटी इज अ फेडरल कॉम्प्रोमाइज देखा जाए तो. ओके, एक फेडरल कॉम्प्रोमाइज एक तरीके से, राइट. तो जीएसटी में बेसिकली टैक्सेशन हैज अ राइट with the state government. They have a right to impose the tax. Okay, but because of the GST, they are losing the right. So for the implementation of the GST, you need a special majority because that is a question on the federal structure. ठीक है, या फेडरल शेयरिंग ऑफ पावर. जैसे कि ऐसे ही पार्लियामेंट, सॉरी, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. क्यों? प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द फेडरल स्ट्रक्चर, बिकॉज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर भी पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, उस वजह से चाहिए, रिमूवल में नहीं चाहिए. रिमूवल में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते. ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इलेक्शन में, लेकिन चाहिए. गॉट द पॉइंट? ओके, सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, to article
368. ठीक है? It empowers the parliament in procedure of the parliament to amend the constitution. So there are two ways. Okay? Special majority talks about special majority. और भी है, जैसे कि वोटिंग का बेसिकली अलग अलग टाइप के अलग अलग वोटिंग्स बोली गई है, ठीक है ना? जैसे कि रिमूवल के लिए, जजेस के रिमूवल के लिए अलग टाइप की वोटिंग है, तो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर जस्ट कंसिडर बिकॉज देयर आर न्यूमरस वेज टू वोट ऑन ए स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. ओके, सो स्पेशल मेजोरिटी एक तो ये. व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? इससे पहले सारी चीजें पता है ना, सिंपल, एब्सोल्यूट, ठीक है, इफेक्टिव. ओके, now type 1 special will. Now what does it says that if it is not you are making an amendment but it is not infringing the not infringing the federal structure, ठीक है, then you do not need the consent of the state. So what does it says that majority of total strength plus two-third plus 1, okay, of present and voting. Okay, these are the two conditions, okay, that need to be fulfilled. Okay. Majority of the total strength, got it? The majority of the total strength will be 50% plus 1. Okay. So let's take an example of Lok Sabha. 50 plus, that is, it is actually what? It is talking about the absolute majority. ठीक है, ये absolute majority है, तो 550 लोकसभा की स्ट्रेंथ है, ठीक है, 550 द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ है इसकी. क्या कह रहा है? 50% प्लस 1, तो इसका 50% विल बी हाउ मच? 275 प्लस 1. This has to be one condition that to be fulfilled. That is equal to 276. Okay. Now 2/3 of the members present and voting. Okay. What it says that suppose out of 550, only 400 members are present. Okay. 400 members are present and voting. Now 2/3 of that. 2/3 of that will be how much? 266. 266 or 267? You take 267. 267 plus 1. That will be 2/3 मतलब कितना होता है? 66%. Or you can say 67%. 67%. That is 268. ठीक है, नहीं समझ में आया? बता दें, पहले ये कंडीशन फिल होनी चाहिए, ठीक है, फाइन. ये फिल हो गया, ये टोटल स्ट्रेंथ का है, इतना तो आना चाहिए, ठीक है, ये आ गया, कोई बात नहीं. उसके बाद में जो प्रेजेंट और वोटिंग है, हमने 400 जो लिया इक्वेशन, वो सिंप्लीफाई करने के चक्कर में, ठीक है. अगर मैं इसे सपोज करूं कि मैं इसे पूरा ले लूं कि सारे ही लोग प्रेजेंट हैं, 550 की स्ट्रेंथ है और 550 ही प्रेजेंट है वोटिंग के लिए. ओके, तो अगर 550 पूरे प्रेजेंट है, तो व्हाट विल बी द 2/3 ऑफ दिस 66%? हाउ मच इट विल बी? 300, 450, 100, 367. Okay. Yeah, 367. It will be 367. Okay, then plus 1.
360. Okay, fine. This can increase or it can decrease, depends upon the present and voting. ठीक है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. ठीक है, प्रेजेंट और वोटिंग के कॉन्टेक्स्ट में. यहाँ पे ये फिक्स है, इतना तो आना चाहिए. ठीक है, और हाँ, ये टोटल स्ट्रेंथ है ना, ये तो टोटल स्ट्रेंथ है, ये तो आना ही चाहिए. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि 200 लोग ही प्रेजेंट है वोटिंग के लिए, तो टोटल स्ट्रेंथ तो वैसे भी नहीं आएगी, तो वोटिंग ही इनवैलिड रहेगी. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट. और ये दोनों इंडिविजुअली सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों कंडीशन. यू टेक आइदर दिस और दिस. ठीक है, जो स्पेशल मेजॉर प्रेजेंट एंड वोटिंग का है 2/3 का, दैट हैज टू बी इंडिविजुअली सेटिस्फाइड. मतलब ये इंडिविजुअली क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, ये क्राइटेरिया इंडिविजुअली फॉलो होना चाहिए. ठीक है, दोनों अलग से, एक साथ में. जनरली कंसीडर करते हैं कि ठीक है 268 लोग प्रेजेंट थे, 300 लोग प्रेजेंट थे, इतने लोगों ने वोट दे दिया, तो भी पास है. समटाइम इट गेट्स डोमिनेटेड, समटाइम दैट गेट्स डोमिनेटेड. इट्स ओके, फाइन. ये है स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, गॉट इट. या नाउ this is regarding when you are not infringing the federal structure of the constitution. Now what happens when you are talking about the federal structure of the constitution? So special majority, you can say type 2. Special majority type 2. What happened in this? कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, ये पूरा सेम कंडीशन फॉलो होगा. That is special majority type 1. ठीक है, special majority type 1, special majority type 1 plus majority of don't type majority plus 50%, more than 50% state approval. More than 50% का state approval. ठीक है, 50% plus one state. Okay, in that case simple majority type 1, more than 50% of the state approval. Okay, state का approval. तो state approval कैसे देता है? By passing a resolution. ठीक है, by passing a resolution. Right? Resolution simple majority, special majority. Simple majority से resolution pass करके approval दे देगा. So if how many state we have right now? 28 है, 29 है, वापस 8 हो गया. 9 था, 8 हो गया. ठीक है, ओके. 28 स्टेट, 9 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास, 8 है, 8 ही यूनियन टेरिटरीज. कौन सा यूनियन टेरिटरी गया? 7 था ना पहले. हाँ, वेरी गुड. दमन एंड दीव 1 कर दिया. यस, 1 करके उसको फिर से आ गया. तो दिस गवर्नमेंट चेंज बिलीव लॉट ऑफ चेंजेस. ओके, अनलेस कि कुछ निकले ना, बट चेंजेस हैं. ठीक है, बढ़िया. So this is what is the simple majority. Okay. Any confusion on this? Special majority में कोई confusion है? No? पूरा वो भी होना चाहिए, प्लस रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट का 50% से ज़्यादा. तो जीएसटी के केस में यही हुआ है. ठीक है, रेटिफिकेशन मिला है. पहले जीएसटी क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? हु हैज ब्रॉट द जीएसटी इन द कंट्री? यूपीए गवर्नमेंट हैज ब्रॉट द जीएसटी इन द कंट्री, बट दे आर नॉट एबल टू पास द जीएसटी. बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट हैविंग द government in the majority of the states. BJP came into the power, they were having a majority in the states. Majority states were the BJP ruled state, so it was very easy for them to pass the GST. So they able to pass GST in 2000
17 1760 70 जुलाई 1st of July या हाँ 16 में डिमोनेटाइजेशन कोई कंफ्यूजन नहीं है ठीक है चलो अभी कुछ कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम ओके फाइन what is the next feature next feature is I've told you federal structure इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताया okay. Your institute has asked me not to dictate in the class ठीक है so I will be dictating very less notes ज़्यादा नहीं मिलेंगे ज़्यादातर notes तुम्हें वो प्रिंट करा के देंगे वो उनका सर्विस है समझेंगे क्या कराना है तुम्हें ओके फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायसनेस ठीक है unitary biasness federal structure with unitary biasness there is a federal structure we have seen that okay because there is a presence of state government as per the constitution why there is a unitary biasness there are some features okay some features which reflect the tendency of what tendency of unitary government ठीक है यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर्स दिखाता है एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज emergency provisions ठीक है emergency provisions under the article 3 emergency provision 52 56 60 okay right so this has been borrowed actually from Canada no ये unitary biasness federal structure with unitary biasness has brought we have borrowed from Canada okay Canadian constitution से हमने इसे borrow किया okay fine so unitary some feature है unitary feature अच्छा ये biasness क्यों दिखता है unitary feature का हाँ without an amendment that is this is important without an amendment to the constitution the entire structure of the federal structure of the constitution can turn into the unitary just by implementing the emergency and implementing an emergency in the country by any political party ठीक है is considered a blot on their career so इंदिरा गांधी के टाइम पे emergency provision आया ठीक है आज तक ब्लेम्ड है ना मेडिकल कोरोना at the time of corona this government has an absolute opportunity to implement emergency in the country but they did not taken that although the condition was worse than emergency in the lockdown they have taken a different route altogether different route so they are actually quite intelligent people smart people how to use the law to bend the law for the benefit of them so अगर मोदी जी भी कर देते तो क्या होता इमरजेंसी जो भी करेगा कितना भी अच्छा लीडर हो तुमने इमरजेंसी कर दिया मतलब try and understand Nehru was such a brilliant leader master orator ठीक है statesman good very good prime minister ठीक है no doubt in that case although he was trained by the best okay बड़े बड़े लोगों से trained था
ठीक है, but he had made a mistake. He imposed the state emergency in Kerala, and for that reason he is still considered as a autocrat. ठीक है, 1960, ओके, केरला में उस टाइम पे केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो ही प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, वो एक गलती थी, ठीक है, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक डन बाय हिम. सो एंटायर द वर्क डन बाय हिम, इट इज बीइंग washed away. So emergency is a very bad, because the people has tasted the freedom. Once people tasted the freedom, they will never going to go back. That is the human tendency. ठीक है, okay, human tendency है, you got freedom. जैसे कि why Myanmar is protesting so much? Already they have tasted what the freedom looks like. They have lived a life for 5 years, not more than 5 years. ठीक है, जनता गवर्नमेंट अपना पावर छोड़ती है 2008 में, फिर होते होते 2015 में इलेक्शन होता है, Aung San Suu Kyi comes to the power. Okay, but you try to understand this. See, they have tasted the freedom. Now Middle East is tasting the freedom. They are still demanding the freedom, so they will get it. So freedom is a beautiful thing. Nobody is going to give it up at any cost. ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन यूनिटरी फीचर का यही फायदा है. ये यूनिटरी बायसनेस कहने का रीजन ये है कि फॉर्मल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, वी डू नॉट नीड अ फॉर्मल अमेंडमेंट टू टर्न द कंट्री फ्रॉम द फेडरल टू द यूनिटरी स्ट्रक्चर, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस. ठीक है, विल कम टू दैट इन द emergency provision in the Article 352 and Article 360. The entire country turns into the unitary structure, ठीक है, but not under Article 356. Only the particular state will turn, relation with the state and the center will turn unitary. Rest will remain same. ठीक है, so you can say halfly it will be a unitary, halfly federal. ठीक है, emergency provision में कुछ unitary features भी हैं हमारे पास में, और भी unitary features हैं. Anywhere else you can see the unitary feature? All India services, yes. Single citizenship, yes. Position of governor, single constitution, state, reorganization of state, ठीक है. So ये सब क्या है? No equality of state representation. This is all the feature of what? Unitary feature. Okay. ये सब यूनिटरी फीचर, तुम देखोगे कि ज्यादातर यूनिटरी ही फीचर है हमारे पास में, रादर देन हैविंग अ, कहने के लिए हम फेडरल हैं. ठीक है, वी इफ यू आर नॉट अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, डोंट राइट इन सच अ वे, राइट लाइक वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर, दिस फंक्शनिंग वेरी स्मूथली, अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट. पॉलिटिकल साइंस अगर ऑप्शनल है तो लिखो, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में लिख सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शन के जीएस पेपर में मत लिख देना ऐसा, जीएस पेपर में ऐसा, हाँ, ऑप्शनल में लिखो अपने. Okay, you can see, okay, fine, we have a unitary feature, federal structure, biasness unitary, but it is very good we are having the federal structure, it's functioning very smoothly. ठीक है, ऐसा. Okay, then next one is, what is another one? We have integrated judiciary. हो गया? Okay. We have a set of fundamental rights. So it is basically, it is a codified. Okay, codified. Fundamental rights कैसा है? Codified है हमारी कंट्री में. Okay, we have codified fundamental rights in the part 3 of the Constitution from Article 12 to 35. Okay. So we have fundamental rights. We have how many type of fundamental? We have 6 type of fundamental rights. 6 टाइप का हमारे पास में. Okay.
Okay, right to equality. Okay, right to freedom. Right against exploitation. Then freedom of religion. That will become in freedom. Okay. Right to freedom of religion. Cultural and education right. And the last is right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies is basically um, uh, taken from UK law. Okay, culture of law over there. जो UK का culture है law का वैसा. We'll come to that in this. Okay. Okay, we have 6 fundamental rights. Except one right, every right is no right is absolute. Okay, एक सिर्फ एक ही right है जो absolute है. हाँ, इक्वालिटी में 4 right है, 5 है, 4 5 है. एक राइट को छोड़ के बाकी सारे राइट्स क्या हैं, क्वालिफाइंग है. सिर्फ एक ही राइट है जो एब्सोल्यूट इन नेचर है. ठीक है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो नहीं इम्प्लीमेंट, अब हम नलीफाई नहीं कर सकते. ठीक है. ओके, emergency provision we have. Now there is another feature, that is single citizenship. सिंगल सिटीजनशिप किया हमने. अच्छा ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप हमने किया, कर लिया. ओके, there is universal adult franchise. Universal adult franchise. Now this is adult franchise. ठीक है, दिस इज एन एडल्ट फ्रेंचाइज. तीनों वर्ड का 3 अलग मीनिंग है. ठीक है. व्हाट इज फ्रेंचाइज? राइट टू वोट. फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. ओके, फ्रेंचाइज मीन्स participating in the political process, and within that process you have as a public, as a citizen of any particular country, you have a right to vote. ठीक है, पहला. Okay. 5. Then you are adult. Now this depends upon the country to country. ठीक है, country to country. Okay. Now you have a right to vote being a citizen. First thing is this is the qualifying. पहला condition ये. दूसरा adult है. ठीक है. So it depends upon the country. It will depends upon पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, उस कंट्री पे डिपेंड करेगा. ठीक है, कि आपको क्या राइट्स मिले. ठीक है. नाउ इन द केस ऑफ इंडिया, एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी वर हैविंग द वोटिंग राइट्स. द एज ऑफ वोटिंग राइट वाज 21. ठीक है, 21 वोटिंग राइट का एज था. आफ्टर 61st Constitutional Amendment Act, 61 ही है ना. Okay, 61st Constitutional Amendment Act, the age has reduced to 80. Now we have a 80 as a. Now the question arises. Now you will this
try and ask the question in the three different stage. Being a citizen, I have a right. Because there is a franchise, we have a democracy. Does every citizen has a right? The answer is no. Then who? Adult. No. यही रुको अभी. Within the citizen, बाहर तो छोड़ दो, बाहर वाले को उसको राइट नहीं है, कोई वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है? Being a citizen, so everybody has a right. So who is citizen in the country? From the 1 day baby, a 1 hour baby, till the person who is taking a last breath on the dead bed. Okay? So सबके पास right है. The answer is no. Answer is the one who is adult. And who is adult, that will be defined by the country. Okay? And how does India define? India defines this. India define first 21 years age, then reduce it to 18 years of age. ठीक है? कोई confusion है? नहीं है ना? Now, within that adult, which adult you are talking about? कौन सा adult? An adult which is depends upon the categorization on sex, either a male or female, depends upon the economy, rich or poor, depends upon the social strata, upper caste, lower caste, higher caste, lower caste. Which adult you are talking about? We are talking about the universal. We are not categorizing anybody. इसी के लिए ये यूनिवर्सल वर्ड यूज है, ठीक है? हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं कुछ भी. मतलब एवरीबडी हु इज एडल्ट हैज अ वोटिंग राइट. तीन वर्ड, तीनों का अलग मीनिंग, ठीक है? हाँ, वो तो एक्सेप्शनल केस है. आप जेल में हैं तो उसका भी है. इसी के लिए राइट टू वोट क्या है? इट्स नॉट अ, हालांकि राइट टू वोट को क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ फंडामेंटल राइट, ठीक है? पर ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है? नॉट इवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है? नॉट इवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. इट इज अ राइट, इट इज अ लीगल राइट. ये याद रखना, ठीक है? व्हाई इट इज अ लीगल राइट? It will be given by the law and it will be taken away by the law. Legal right means it will be taken away by law or it will be given by law. ठीक है? Okay? Why? You might be a prisoner. You might be a criminal. The government does not allow, wants to give you a voting right. It is fair. You might be a सेडिशन चार्जेस हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है? या मेंटली अनस्टेबल हो. फंडामेंटल राइट अगर आया तो हर किसी को देना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सिटीजन. यू गॉट इट? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नाउ दिस इज द ओनली प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इट इज ओनली प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डज नॉट हैपन. इस पर डिस्कशन नहीं हुआ है, इसको डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया गया है. और हालांकि ऐसे देखा जाए तो राइट टू वोट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन है? नहीं है, नहीं. दैट एज हैज बीन रिड्यूस्ड. द एज रिडक्शन ऑफ एज इज मेंशन, ठीक है? जैसे राइट टू वोट इज नॉट मेंशन इन द फंडामेंटल राइट, ठीक है? गॉट इट? राइट टू वोट अगर फंडामेंटल राइट में मेंशन होगा, such a paradoxity that we have a right to property as a constitutional right, but you do not have a right to vote, which is actually more basic to democracy rather than having a right to property. So if there is a constitutional protection to the right to property, then who have framed the constitution? कौन लोग हैं वो? क्या कहते हैं? द कैपिटलिस्ट क्लास. अगर राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इनफैक्ट इट वाज अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट था वो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर से मेंशन है तो हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? द कैपिटलिस्ट क्लास. देन हु रिमूव द फ्रॉम दैट?
फंडामेंटल राइट से निकाल के बाहर कम्युनिस्ट, ठीक है, मोर जनता पार्टी गवर्नमेंट, 44th अमेंडमेंट एक्ट दैट इज गिवन इनटू द आर्टिकल 309. ओके, चलो विल कम टू दैट. कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? इंटीग्रेटेड जुडिशरी कर लिया हमने. ओके, अनदर इज independent constitutional body. So we have independent constitutional bodies, like you can say CAG, UPSC, Election Commission of India. Then there are many other bodies. Okay, state PCS है, बहुत सारी bodies है. Okay, why we need such body? So ensure करने के लिए, ठीक है, least legislative interference or independent function of such bodies. Why the bodies are known as constitutional body? First, they are mentioned in the constitution. They are being directly created by the constitution. They are deriving their power from the constitution. First. Second, why there is no, why it is called as an independent. Okay? Why it is called as independent? Because their removal and their appointment is not in the hand of, exclusively in the hand of executive. Legislature कभी appoint नहीं करता किसी को, ठीक है? They never appoint anybody. Okay? They never appoint anybody. That is the job of appointing, is a job of executive, not a legislature. ठीक है? But in certain cases, they are appointed by the executive. Like in the Election Commission of India, they are appointed by the executive, but they are removed by the legislature by passing a resolution, impeachment, a removal procedure. Okay, so either you will have a removal, appointment or removal in the same hand, then there will be a no independence. I can remove you and I can appoint you. Okay, like that. But if we divide that, okay, fine. Somebody will appoint you and somebody else will remove you. अगर दोनों अलग अलग हो तभी हम कह सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट. सेकंड, उनका सैलरी वो कंटिन्यूसी, सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अनचार्ज फंड है, ठीक है. यू नो अनचार्ज फंड, विल कम टू दैट. व्हाट इज एन अनचार्ज फंड? अनचार्ज फंड मीन्स चार्ज और अनचार्ज फंड. ओके, पहले अनचार्ज फंड देख लो क्या है. अनचार्ज फंड वो फंड है जिसपे वोटिंग कंपलसरी है. अनचार्ज फंड, अनचार्ज फंड जो है या अनचार्ज एक्सपेंडिचर जिसमें वोटिंग कंपलसरी है, इट हैज टू बी पास बाय द लेजिस्लेचर. और चार्ज फंड वो फंड होता है जिसपे वोटिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो बजट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. तो जिसपे वोटिंग है दैट इज नोन एज अनचार्ज फंड, जिसपे वोटिंग नहीं है दैट इज नोन एज चार्ज फंड. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के जितने भी हैं सबके सैलरीज अलाउंसेस, इट इज अ चार्ज फंड, मोस्टली चार्ज फंड है. ओके, गॉट इट? ओके, right, there is a blend of parliamentary constitution. Constitution has written wrong. He has written parliamentary sovereignty, right? Parliamentary sovereignty लिखा है. Written somewhere parliamentary sovereignty, blend of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Parliamentary sovereignty is a wrong statement. Parliamentary sovereignty, it's wrong.
इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी। वैसे पार्लियामेंट सोवरेन है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, मतलब पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट बॉडी टू मेक अ लॉ इन द कंट्री, ठीक है। पार्लियामेंट को किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, पर पार्लियामेंट हैज अ लिमिटेशन। हाँ, तो दोनों ही अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन नहीं, इस केस में कैसा होता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना, रिव्यू, द रीजन इज दैट जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फाइनल इंटरप्रिटेटर। सो वट एवर लॉ द पार्लियामेंट इज गोइंग टू मेक, व्हेन यू टॉक अबाउट सोवरेनिटी, there is no one above you. When you talk about sovereignty, there is no one above you. You are the final. Whatever you say is final. ठीक है, तो पार्लियामेंट नहीं है सोवरेन, ठीक है। पार्लियामेंट अपने डोमेन में है, हम कह सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इंटैक्ट है। तो रादर देन हैविंग अ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, इट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, you can write parliamentary system with judicial, what is judicial? Supremacy. Now I'll tell you, there is a difference between these two. You know this is a parliamentary system. So we have a parliamentary system, it is the legislature that is, in the parliamentary system what happens? Legislature is sovereign. Legislature क्या है? Sovereign है, ठीक है, legislature sovereign है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर सोवरेन होता है, कैसे? व्हाट हैपन इन ब्रिटेन? ब्रिटेन में पार्लियामेंट इज सोवरेन, एब्सोल्यूट है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये है किसका प्रिंसिपल? सोवरेन, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में ये सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। नाउ जुडिशियल सुप्रीमेसी, दिस इज बेसिकली ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फीचर है, ठीक है, जुडिशियल सुप्रीमेसी, बिकॉज इन द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, इन द फेडरल स्ट्रक्चर, फर्स्ट थिंग इज दिस, व्हेन यू हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेटर कौन होता है? या कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट हो बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, जुडिशरी होगा, क्योंकि ही इज द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन है, कंसिडर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, आर्बिट्री है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेशन किसके पास जाएगा? जुडिशरी के पास। इसी के लिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेशन किसके पास है? जुडिशरी के पास। इसी के लिए इंडिया में कौन सोवरेन है? सोवरेन भी कॉन्स्टिट्यूशन है और सुप्रीम भी कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों ही वही है। पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, पार्लियामेंट अपने डोमेन में है, ऑल्दो इसके पावर बहुत कम है देखा जाए तो, ठीक है। यस, जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल वहां नहीं है। जुडिशरी अभी अभी तो उनका सुप्रीम कोर्ट अभी तो बना है, सुप्रीम कोर्ट उनका अभी बना है 2008 में, उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, ठीक है, एक्चुअली वही सुप्रीम कोर्ट की तरफ मतलब प्राइवेट काउंसिल होता है, ठीक है, याद है प्राइवेट काउंसिल के बारे में जानते हो? वॉरेन हास्टिंग का प्राइवेट काउंसिल ने इन्वेस्टिगेट किया था, तो प्राइवेट काउंसिल होता है पूरा, तो प्राइवेट काउंसिल में सब बैठते हैं, सारे हाउस ऑफ लॉर्ड बैठ जाते हैं, दे टेक अ डिसीजन, दे एक्ट लाइक ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है रिसेंटली, हाँ, अभी बहुत बहुत कम पावर है उसके पास, अभी भी कम ही पावर है उसके पास, ठीक है। तो वहाँ पे पार्लियामेंट एक्चुअली बहुत सोवरेन है, पार्लियामेंट एब्सोल्यूट है वहाँ पे, इसी के लिए वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स
का कोडिफिकेशन नहीं है, ठीक है, वहां पे फंडामेंटल राइट का कोडिफिकेशन नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि पार्लियामेंट इज वेरी सोवरेन। ओके, सो वहां पे तो ये प्रिंसिपल जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो प्रिंसिपल है, जो जुडिशियल सुप्रीमेसी का प्रिंसिपल से निकल के बाहर आता है जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल यहीं से निकल के बाहर आता है। जुडिशियल रिव्यू दो कॉन्टेक्स्ट में होता है, एक होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चलो विल कम टू दैट, ठीक है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है अभी नहीं है ना? ओके, हाउ मेनी फीचर्स वी हैव डन सो फार? 8-10 कर लिया हमने, 8-10 फीचर्स हो गए होंगे। बेसिक स्ट्रक्चर, basic structure. What is the basic structure? We'll study this individually. हम इसे अलग से पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। We will read preamble, उसका अमेंडमेंट जब पढ़ेंगे तब उसी में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। और एल्स वी कैन स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर, एक अलग टॉपिक ही पढ़ेंगे पूरा, रहने दो, हाँ ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, it is not defined, first it is not defined in the constitution, it is nowhere mentioned in the constitution. The word basic structure is not mentioned anywhere in the constitution, first. Second is, this is an Indian judicial innovation. इसका मतलब ये है कि कुछ बेसिक एलिमेंट है, ठीक है, कुछ बेसिक्स एलिमेंट है जिसे पार्लियामेंट को फॉलो करना पड़ेगा while amending or making any law, not even amending, even making any law, they have to follow certain principles or the basic tenets of the constitution. Now this basic tenets can be anything, okay, वो भी कोड बताएगा, तो तुम्हारे पास है नहीं है, इससे अच्छा कोड बोलेगा डिफाइन कर दो, लाइसेंस से बोल ही रहा है डिफाइन कर दो भाई बेसिक स्ट्रक्चर, दे विल नेवर डिफाइन इट। पता, उनको पता है बहुत अच्छे से, उन्हें पता है कि जैसे हम डिफाइन करेंगे एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि सम व्हेन यू डिफाइन समथिंग यू कन्फाइन समथिंग, तो हमेशा लूप होल छोड़ देते हैं, इट्स बेटर नॉट टू डिफाइन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द बेसिक स्ट्रक्चर इज। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1773 केशवानंद भारती केस में, ठीक है, 1773 में केशवानंद भारती केस में आया था। 1973 sorry 1973 है, 1773 में केशवानंद भारती केस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है इसके ऊपर, ओके फाइन। एनी कंफ्यूजन ऑन दिस? नो, ओके। देन इंडिया इज सेकुलर कंट्री, you have a secular constitution, क्या है हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन? पॉजिटिव नेगेटिव बात में देखनी है, पढ़ाया तुम्हें सेकुलरिज्म क्लास में पढ़ाया नहीं ना क्लास, ठीक। So this is what you have as a basic structure, okay. Kindly read from your book what are the items that are borrowed from different countries, ठीक है। जैसे कि रूल ऑफ लॉ वी हैव टेकन इट फ्रॉम ब्रिटेन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन, ओके। फेडरल स्ट्रक्चर वी हैव टेकन फ्रॉम यूएस, फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ पे है पहले? यूएस, तो वहीं से लोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू भी वहीं से है, जुडिशियल सुप्रीमेसी भी वहीं से है, ठीक है। फंडामेंटल राइट वहीं से है। जुडिशियल एक्टिविज्म किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है खाली,
ठीक है, एज ए कॉन्सेप्ट है। ओके, फंडामेंटल डीपीएसपी कहाँ से लिया हमने? आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिया? सोवियत यूनियन से। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने सोवियत यूनियन से लिया है। एंड प्रेसिडेंट का इलेक्शन, रिमूवल, यू चेक इट आउट फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन व्हाट। ओके फाइन, देख लेना एक बार, मेमोराइज कर लेना जितना हो सकता है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जर्मनी से हमने क्या लिया? इमरजेंसी। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी से हमने इमरजेंसी लिया, ठीक है। Okay, you read it, it is there in the book, or you will get the notes on that. Read it from there. Okay, any question here? No? Good. Secularism? अभी नहीं, अभी पढ़ाएंगे, बताएंगे। Secularism actually में preamble में है, तो preamble, we start preamble, then we'll see. Okay, let's talk about preamble. So what is preamble? Summary of anything. Okay. कोई पढ़ो preamble, कोई एक आदमी। You have the book with you? उन्हें book दो। It is one of the most important topic. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे, किसके लिए? प्री मेंस इंटरव्यू सब। सिट डाउन, सेकंड भाई, 1 सेकंड। इंटरव्यू भी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग पूछ लेते हैं कभी कभी। प्रियम्बल पढ़ो। नो, डायरेक्टली राइट ओनली प्रियम्बल, प्रियम्बल खाली पढ़ो। Last. पढ़ो, हाँ पढ़ो। The people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its freedom, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. We the people of India having solemnly resolved to constitute into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Right. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Okay. So preamble is the last document which is passed in the Constitution Assembly. Last document जो पास हुआ है Constitution Assembly में, ठीक है।
जनरली एक्सप्रेशन ये होता है, if the convention, we take the convention. In America, we have America has the preamble. First country to have the preamble is America. Now, what happened in that country? They have first adopted the preamble, then they have made the constitution. What we have done, we have made the constitution, but we have adopted the preamble at last. Now, this is one thing. But if we see in another way, we have already adopted the objective resolution. And you will see in the preamble, most of the component of the objective resolution is actually there in the preamble. And then what is actually a preamble? Preamble is a far-sighted goal. Preamble क्या होता है? Far-sighted goal होता है किसी भी कंट्री का. मतलब हम कहाँ क्या अचीव करना चाह रहे हैं इन द कोर्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन. ठीक है, किस तरीके की सोसाइटी हम बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, what kind of a society we are going to build, what kind of an economic system we are going to have, what kind of political system we are going to have. ठीक है, what kind of a social system we are going to have, what will be the relation between individual and the state, what will be the relation between individual and individual, how the society is going to function. So broadly we categorize. ठीक है, हम लोग ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं. उसके बाद में हम उसके माइन्यूट डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन में फिल करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स जो प्रोविजन के फॉर्म में, आर्टिकल्स के फॉर्म में हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं, ताकि द मोर वी राइट देयर इज अ लेस एम्बिग्युइटी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द law, interpretation of the preamble or the constitution itself. Basically, when you read the constitution now, you don't read anything, you can say what is written beyond preamble. Just try to understand the expression mentioned in the preamble by the constitution itself. Okay, when we talk about it is a democratic country. Now, democratic country has a multiple elements. That is, first, democratic है, कैसा होना चाहिए? राइट टू. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या है? पीपल पार्टिसिपेशन. क्या? इलेक्शन. क्या? पावर इज विद द पीपल. द वी वर्ड is very important. Why word we has been used first? It is better to use democratic country. The word we has used in the preamble, it signifies that we मतलब क्या है? In democracy का सबसे important element क्या है? देखो, people has the power. People is the center of everything. ठीक है? पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आ रहे हैं. ठीक है, पहला, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस आते हैं. ठीक है, अभी वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रहा है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. यूपीएससी में क्वेश्चन राइट और रॉन्ग पे ज्यादा नहीं है. हाउ द क्वेश्चन इज फ्रेम, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऐसे वर्ड यूज कर रहा है पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उसे पता है कि when the students start preparing for the exam, the very first book they take is the polity, and that is Lakshmikant. ठीक है, तो वो जानते हैं, तो they will ask you a question which is not there in the Lakshmikant. Very basic. Okay, so you should need to understand कि सबसे important क्या है और सबसे important क्या नहीं है. ठीक है, so democratic element का सबसे important element क्या है? The power to the people. अगर क्वेश्चन ये आ जाए, ऑप्शन ये आ जाए कि डेमोक्रेटिक एलिमेंट का दिस पीपल इज द सेंटर ऑफ द पावर. ठीक है, एक ऑप्शन ये आ जाए. दूसरा, पीपल हैज अ राइट टू वोट. दोनों राइट है, रॉन्ग है? पीपल हैज अ राइट. और तीसरा ऑप्शन है पीपल हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. ये तीसरा है. Right to vote and participating in the political process is two different things. ठीक है, okay? Right to vote and participating in the political process, इसका मतलब ये होता है right to vote उसका पार्ट है political process का.
ठीक है, ओके। अभी 3 ऑप्शन है, विच इज राइट? अब ऑल द 3 इज राइट, तीनों राइट है ना, मतलब इसमें तो कोई ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। फर्स्ट वन, द पीपल इज द सेंटर ऑफ द पावर, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो what do you see? You see the expression throughout that is mentioned in the preamble, and that particular expression, whatever the major enshrinement that is given in the constitution preamble, it is minutely discussed, try and discuss in the entire provision of the constitution. Okay? That is the reason Supreme Court at times look to the provisions or look to the preambles for taking a considering as a philosophy behind the constitutional maker. Okay, उनका philosophy क्या रहा? Okay, so we'll start with 1 or 2 question. Okay, एक एक वर्ड के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? सोवरेन। सोवरेन किया है हमने पहले, सोवरेनिटी किया हमने। सबसे पहला वर्ड है सोवरेन। सोवरेन किया है, एक्सटर्नल इंटरनल सोवरेनिटी हो गया ना सोवरेन। यू अंडरस्टूड द सोवरेन वर्ड, ठीक है। सेकंड इज सोवरेन का सिंपल मीनिंग ये है कि कोई हमें डिक्टेट नहीं करेगा हमें क्या करना है ना। ये हमारा काम है कि हम कैसे लॉ बनाएंगे अपने लोगों के लिए, और बाहर कैसा हमारा किसके साथ में कैसा रिलेशन रहेगा वो देखेंगे, वो हमारी मर्जी है। सो व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई फॉर द फार्मर्स लॉ। सम सिंगर हैज क्वेश्चन Rihanna, even it was discussed in the British Parliament. Why British Parliament is discussing the internal matter? It is our sovereignty. British Parliament can discuss their problem, that dominion status को डिस्कस करो। ऑस्ट्रेलिया है तुम्हारे पास, कनाडा है, वहाँ डिस्कस करो। यहाँ क्या कर रहे हो? वी आर सोवरेन कंट्री। नोबडी हैज अ राइट टू डिक्टेट आवर लॉ, फर्स्ट थिंग, ठीक है। नोबडी हैज अ राइट to dictate our law. Second, when you're talking about sovereign, I might have a very good relation with the autocratic country, and I might have a very bad relation with the democratic country. That is my right to decide. So India has a very good relation with South Korea has उसका अच्छा relation. India has a very good relation with the Middle East, especially Iran. ईरान के साथ बहुत अच्छा relation है उसका। What is Iran? ईरान इज अ थियोक्रेटिक कंट्री। मिडिल ईस्ट के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है उसके। म्यांमार के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है। कैसी कंट्री है? अभी जो मिलिट्री रूल है वहां पे, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत सारी जगह इंडिया के अच्छे रिलेशन नहीं रहे। पाकिस्तान इज नॉट, कहने के लिए, ठीक है। सो वैसे देख लो ना, डोंट सी इट लाइक दिस। सी अमेरिका, कांग्रेस आएगी, अमेरिका के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा। रशिया आएगी, रशिया के साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आइडियोलॉजी मैच कर रही है, गेटिंग द पॉइंट। तो जरूरी नहीं है हम किसी का रिलेशन रखे नहीं रखे, हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। दैट इज मीन द सोवरेनिटी। यू विल नॉट डिक्टेट अस। कंपेलिंग होती है, ठीक है, कोई बात। ओके, सो द सोशलिस्ट, ओके। अब जरा इसको अच्छे से देखो, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार आ रहा है। सो इंडिया इज अ सोशलिस्ट according to the constitution. According to the constitution, India is a socialist country. But if you see in the terms of practice, India is not a socialist. India practice के फॉर्म में सोशलिस्ट नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस के इट इज मोर मूविंग टूवर्ड्स, देखो पहले समझने की कोशिश करो सोशलिज्म का अपोजिट क्या है। सोशलिस्ट का मतलब होता है सोशलिज्म, ठीक है।
सोशलिज्म, द वन हु प्रैक्टिस सोशलिज्म इज कॉल्ड सोशलिस्ट, ठीक है। सो इसका अपोजिट है हु सेड फासिज्म, ये तो कैपिटलिज्म का एक्सट्रीम है, इसका अपोजिट है कैपिटलिज्म, ठीक है। अभी पहले सब देख लो, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इंडिया का क्या सिचुएशन है, ठीक है। व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म मीन्स सोशलिज्म का अपोजिट कैपिटलिज्म। व्हाट इज कैपिटलिज्म? पहले इसका आंसर देना बहुत जरूरी है, तभी सोशलिज्म समझ में आएगा हमें। कैपिटलिज्म अगर हम देखें ना, तो बाय नेचर ह्यूमन इज कैपिटलिस्ट and by force human are made to socialist, ठीक है, by force। ये बहुत ही डिलेमा टाइप का सिचुएशन है ह्यूमन के साथ, ठीक है। कैपिटलिज्म का सिंपल मतलब ये है कि माय लेबर एंड माय रिवॉर्ड, काइंडली राइट अलोंग विथ मी ओनली, ओके, थोड़ा सा लिखो। I'll dictate you. This is an important area where the dictation is needed. ठीक है, I'll dictate you, but थोड़ा अपने समझते समझते लिखो जो तुम्हें समझ में आ रहा है। सिंपल मतलब कैपिटलिस्ट का ये है कि माय लेबर एंड द रिवॉर्ड फॉर माय लेबर, दैट इज माय प्रॉफिट। तो ये मेरा लेबर है और ये मेरा प्रॉफिट है। आई एम द सोल ओनर। क्या है इसका? आई एम द सोल ओनर, नोबडी एल्स इज द ओनर, ठीक है, पहला ये। नाउ योर लेबर, यू आर द सोल ओनर, द प्रॉफिट ऑफ दैट लेबर इज विथ यू, दैट इज अंडरस्टूड, राइट? कैन यू कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? नाउ दैट इज योर लेबर, ठीक है। नाउ योर लेबर might be your physical strength, एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ है, दैट इज योर बॉडी, दैट इज योर लेबर, ओके। एक और लेबर जिससे तुम यूज कर सकते हो, जिसे तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, लेबर के फॉर्म में। तो क्या हो सकता है? योर असेट। तो फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है? ठीक है, दो, अभी समझने की कोशिश करो, वहां कहाँ जंप हो गए हम लोग, मैं बताता हूँ। लेबर है, मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो आई हैव द कंप्लीट ओनरशिप एंड दिस इज माय प्रॉपर्टी, माय फिजिकल, ठीक है। सो वन इज योर बॉडी, एक तो तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, जिसपे तुम्हारा एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है। एक होगा जो तुम्हारी, तो ये तो प्रॉपर्टी, बॉडी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज योर प्रॉपर्टी, योर बॉडी योर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरीके से यू माइट हैव सम अदर प्रॉपर्टीज विच इज अवे फ्रॉम योर बॉडी। एनी क्वेश्चन? किसी को समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है? अब कंफ्यूजन हो रहा है? दूसरा, जो तुम्हारी बॉडी से बाहर की प्रॉपर्टी है, दैट इज एनीथिंग दैट इज एक्सटर्नल फ्रॉम योर बॉडी, दैट इज लैंड, पेन, पेपर, एनीथिंग, हर वो चीज। मनी भी कैपिटल, वो फॉर्म डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, वो हम डिवाइड करते हैं बाद में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? एक तो मैं खुद हो गया, मैं अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। भाई व्हेन यू born, what you are? You are just a owner of your body. With time तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पापा इतने अमीर हैं, ठीक है, ये मेरा हो गया, ठीक है। अभी समझ में आया ये व्हाट इज अवे फ्रॉम द प्रॉपर्टी? बॉडी से बाहर की चीज क्या क्या होती है, ठीक है।
बॉडी के बाहर की चीज ये है, ठीक है। सो वट एवर दैट इज अवे फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। नाउ this particular body, that is a property, it is an intangible. इसका जो लेबर है वो क्या है? इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब इसका लेबर तुम कर सकते हो, दिखा सकते हो। लेबर का कोई यूनिट वो है, फॉर्म है? नहीं है। दिस इज माई लेबर, ठीक है। आई एम टीचिंग यू, तो मैं किसी फॉर्म के स्ट्रक्चर में दे सकता हूँ आपको? इसको नहीं दे सकता। इसे कहते हैं हम लोग इंटेंजिबल। तो ये तुम्हारी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इससे बाहर क्या होगी? तुम्हारी टेंजिबल प्रॉपर्टी। तो इमोशन समझते हो? इमोशन क्या है? इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। इमोशन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। गुस्सा, खुशी, प्यार, गम, ठीक है, सब क्या है? दैट इज एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल थिंग्स। नाउ टेंजिबल, ठीक है, दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट कैन बी लैंड, ठीक है, लैंड हो सकता है, कैपिटल हो सकता है। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, मनी, ठीक है, कैपिटल हो सकता है, ओके, मनी। तो लैंड एंड प्रॉपर्टी, टू थिंग, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, वेरी गुड। सो व्हाट दे से, द कैपिटलिस्ट से, this is everything is mine. Now this intangible, this tangible, that is land and capital, is created by labor, by my labor. ये कौन क्रिएट किया है? My labor and my talent, that belongs to me only, and I am the sole owner. If that particular thing has created this particular property, my external, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, तुम्हारी इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है ये। यू गेटिंग इट? कौन कंफ्यूज है अभी? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तुम्हारी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है। इंटरनल प्रॉपर्टी तुम्हारी बॉडी है, सिर्फ उसका स्ट्रेंथ। आइदर यू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ अ वॉरियर और यू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ अ बुद्धा, ठीक है, हाई माइंड, ओके। तो दो ही प्रॉपर्टी, अगर तुम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है तो भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बट इट इज रेयर, ठीक है, ओके। सो दिस इज दिस। नाउ व्हाट दे से, व्हाटएवर इज माय एक्सटर्नल प्रॉपर्टी क्रिएट्स अ प्रॉफिट, ठीक है। जो ये प्रॉफिट बनाएगा, कौन? एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल जो प्रॉपर्टी है मेरी, आई शुड हैव द कंप्लीट अथॉरिटी ऑन दैट। अभी समझ में आया? I should have a complete authority on that. Nobody is allowed to take that authority from me. That is known as capitalism. अभी समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया पहले बताओ? कहाँ से नहीं समझ में आया है? देखिए, एक होता है लेबर। आपके पास में दो तरीके के लेबर है, हर लेबर प्रॉफिट देता है, ठीक है। लेबर दो है, तो लेबर क्या है? आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बॉडी की है, अपनी खुद की, और एक फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है कि आप जो एक इंटेंजिबल हो गया, एक टेंजिबल है जो आपकी प्रॉपर्टी के हिस्से में आती है, लैंड, कैपिटल और मेनी अदर थिंग, ठीक है। कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। ये जो प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा कौन? टेंजिबल। जो प्रॉफिट क्रिएट करेगा, टेंजिबल स्ट्रेंथ आपकी, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर सोल राइट किसका है? मेरा, ठीक है, मेरा सोल राइट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? वो तो एब्सोल्यूट होता ही है। कहाँ पे? हाँ, you are doing a job, you are actually dictated, compromise है, job is compromise। हाँ तो ठीक है, तो वो जितना हाँ तो उसके लिए है ना,
इंटेंजिबल के लिए जो तुम लेबर दे रहे हो उसके लिए सोल राइट है तुम्हारे पास में। कैसे? पेटेंट, कॉपीराइट, मालूम है ना? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है ये सब? ये जो तुम्हारे दिमाग से चीजें निकली हैं, ये उसका तुम्हारे पास सोल राइट है ना, उसका तो यार सोल राइट्स, ठीक है। लेकिन अभी जैसे लेबर पे आएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि तुमने बोला कि सर हर किसी के पास में लेबर अवेलेबल नहीं है, हर किसी के पास लेबर या कैपिटल अवेलेबल है, लेबर सबके पास में। तो सर आई हैव अ लेबर, ठीक है, यही मेजर डिस्प्यूट है बाद में, मार्क्स इसी को कहता है, ठीक है। वेलकम टू दैट। यहाँ पे क्या कह रहा है, यू मेड दैट अ बिट कंफ्यूज्ड, ठीक है। मार्क्स क्या कहेगा आकर के, यही कहेगा मार्क्स कि इफ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, दैट इज माय लेबर, and my labor is producing something, my labor is producing something, ठीक है, because of my labor you're gaining a profit. If my labor, by I have a complete authority on my labor, ठीक है, तो whatever is created by my labor should belong to me also, should belong to me also, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो ना, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि ये इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करो, ये इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए कितने लोग हैं? टीचर चाहिए, स्टाफ चाहिए, वो भी चाहिए। अब इस थियरी पे अगर जाएं कि बिकॉज ऑफ माय लेबर, ठीक है, आई हैव अ कंप्लीट अथॉरिटी ऑन माय लेबर, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, जो मेरा लेबर प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, ठीक है, आई शुड बी हैविंग अ कंप्लीट अथॉरिटी ऑन दैट, ये मार्क्स कहेगा। नाउ एनी पर्टिकुलर एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी एक आदमी से रन नहीं होती है, कलेक्टिवली रन होती है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि ये जो लेबर से जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट, दैट हैज टू बी शेयर, ठीक है। कहने का मतलब ये चीजें क्या होना चाहिए? शेयर होना चाहिए सबके साथ में, ठीक है। बट नॉट योर क्वेश्चन कम्स टू दिस, ओके, तुम्हारा यही क्वेश्चन, यही डिस्प्यूट है। व्हाट कैपिटलिस्ट डू? they pay you in the terms of salary for your labor, ठीक है, in the terms of salary for your labor, and for that they pay you and take all the profit. अभी समझ में आया? ठीक है, अभी समझ में आया? तो you're doing a job is what? You're doing a job, it is doing a job or getting a salary is a compromise, where you make a compromise. Okay, fine, I'll do this much job, you give me this much money, rest is mine, you whatever profit you want, that is your problem. अभी समझ में आया? ठीक है, नाउ लेट्स ब्रिंग द टेक्निकल टर्म, ये बहुत बेसिक समझाया है तुमने, ठीक है, ओके फाइन। अब टेक्निकलिटी में अगर डेफिनेशन पे आते हैं कैपिटलिज्म के, कैपिटलिज्म को डिफाइन करते हैं, तो कैपिटलिज्म कहता है कि द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अभी समझ में आया वर्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समझते हो? हर वो चीज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ मतलब ये नहीं कि कंपनी में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको सिर्फ, हर वो मीन जो कोई चीज प्रोड्यूस करने में लगे, सारी चीजें जो एक नई चीज प्रोड्यूस करने में लगे, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स टू, कैपिटलिज्म में बिलोंग्स टू प्राइवेट इंडिविजुअल। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? प्राइवेट इंडिविजुअल के पास में, ठीक है, यू गॉट इट? कोई कंफ्यूजन इसमें? कुछ भी नहीं है, गुड, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट दे से, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्राइवेटली इंडिविजुअल के पास में होनी चाहिए। इट इज सिंपल, ऑब्वियस है, अच्छा भी लगता है सुन के, है ना, ठीक है। देन वेयर इज स्टेट? स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। नहीं, कैपिटलिस्ट तो चाहते ही हैं स्टेट को, कुछ चाहते हैं,
दे डोंट नीड कॉन्स्टिट्यूशन, दे नीड स्टेट। ठीक है, स्टेट तो बहुत जरूरी है उनके लिए, स्टेट हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करता है। स्टेट ऑलवेज फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट रिच। ठीक है, बताओ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे स्टेट के पास, इंडिविजुअल के पास में। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर इंडिविजुअल के पास में है तो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर इंडिविजुअल के पास, अब ये मीन्स का मतलब क्या है? इट्स वेरी इरिटेटिंग। Now, this means of production ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दो टर्म यूज है। प्रोडक्शन मीन्स न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। यू विल नॉट मेक अ प्रोडक्ट फॉर टू स्टोर। तुम प्रोडक्ट बनाते हो स्टोर करने के लिए, सेल करने के लिए। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू सेल। ठीक है, व्हाई यू सेल? विल यू एवर सेल समथिंग इन द लॉस? नो, यू विल सेल फॉर प्रॉफिट। ठीक है, अभी समझ में आया? ठीक है, अभी मीन्स, व्हाट इज मीन्स? तो मीन्स इज पहले तो लैंड, ठीक है, दूसरा कैपिटल, देन लेबर, स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। इंफ्रा इसी में आता है। ठीक है, इंफ्रा भी है कहीं कहीं। दिस इज बेसिक। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल में ही इंफ्रा आएगा। ठीक है, एक फाइनेंशियल कैपिटल होगा, फाइनेंशियल कैपिटल होता है और एक वैसा कैपिटल होता है। ठीक है, नाउ व्हाट डज इट सेज दैट दिस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये क्या कहेगा? ये कौन कह रहा है? कैपिटलिस्ट क्लास। एंड व्हाट दे से, व्हाई दे से? बिकॉज व्हाट दे से, इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन this is provided by me, this is provided by me, this is provided by me, है ना? And I'm paying them. What I'm doing? I'm paying them. ठीक है? So the entire profit generates from this collaboration should be with me, rather than it is getting distributed. I'm paying it, no? ठीक है? Okay? This is what the capitalism talks about. And this is what the capitalism gives the argument on. ठीक है? अभी कोई confusion नहीं ना? Very good. Now, what does socialism say? The means of production. According to them, the means of production, what they say, the means of production should be controlled. Should be controlled by, no, पहले स्टेट नहीं बोलते हैं लोग, should be controlled by third party. ओके, ऐसे समझते हैं, should be controlled by third party. कौन कंट्रोल करेगा? थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कौन हो? Then they say this third party should be, क्योंकि स्टेट सबसे आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन माना जाता है। आर्बिट्री क्या समझते हो? कि जो बायस नहीं है, एक तरफा नहीं है किसी में। ठीक है, आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन इज ए स्टेट। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी
विद द स्टेट। और थर्ड इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, ना ही लेबर का हो और ना ही ओनर का हो, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पूरा हो, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट, ठीक है। लेकिन कितना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के पास में होना चाहिए? हाउ मच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन should the state have? The state should have only important means of production according to the socialist. Important, necessary means of production should be with the state. Rest should be with the private. ठीक है, ये एक्चुअली क्या है? ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या है? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इसी का एक्सटेंशन है। इसका जब आप ये पूरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटली अंडर कंट्रोल कैसे करोगे? कंप्लीटली इन द कंट्रोल ऑफ स्टेट, ठीक है, कंप्लीटली इन द कंट्रोल ऑफ स्टेट, दैट इज अ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। पर लास्ट में लिसन लास्ट में मार्क्स बोलेगा, पहले तो मार्क्स क्या बोल रहा है? मार्क्स टॉकिंग अबाउट, मार्क्स कंसीडर सोशलिज्म एज अ ट्रांजिशनरी पीरियड, ठीक है। वेट अ मिनट, कैपिटलिज्म समझ में आ गया? यहाँ पे स्टेट का रोल कितना है? वेरी लेस। यहाँ पे स्टेट का रोल कितना है? कितना? खाली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और फॉरेन रिलेशन को देखना। बाकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या पूरी इकोनॉमी चलाने का काम प्राइवेट कर लेगा। सबसे बड़ा एडवोकेट कौन है लिबरलिज्म का? द फादर ऑफ लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, ऐसा नहीं, डोंट राइट लिबरलिज्म, फादर ऑफ कैपिटलिज्म और द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, his book Wealth of Nation in 18th century, 18th century, ठीक है। मार्क्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया उसको, ठीक है। एंड ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्थ ऑफ नेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ठीक है, द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, that is two invisible hand is the demand and the supply, ठीक है, ओके। दिस इज हाउ द कैपिटलिज्म फंक्शंस। अभी ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके, नाउ सोशलिज्म समझ में आया कि सोशलिज्म क्या कह रहा है? ओनली इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज विद द स्टेट एंड रेस्ट विल विद द प्राइवेट। तो इट इज लाइक अ ब्लेंड ऑफ बोथ, ठीक है। ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कब है? मार्क्स से पहले, अभी मार्क्स नहीं आया है। ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का ग्राउंड क्या है? इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का ग्राउंड क्या है? दैट इज वन ग्राउंड, ठीक है। क्यों ना हो? क्यों चाहिए इक्वालिटी? हाँ, पुअर का उनकी राइट खत्म कर देंगे, ठीक है। क्यों? वाई? जरूरी नहीं है, नहीं। कैपिटल सोसाइटी डिक्टेट करेंगे, रूल करेंगे, उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं, ओके। उसे प्लूटो अभी भी चल ही रहा है, वैसे ही चलता है। लेकिन क्यों चाहिए ये आर्ग्यूमेंट? क्यों चाहिए इक्वालिटी होना चाहिए? मतलब कोई तो साउंड रीजन होना चाहिए ना। अपॉर्चुनिटी तो है, इनका ग्राउंड क्या है? इसको क्रिटिसाइज करने का ग्राउंड क्या है? हाँ, अरे लेकिन कोई ग्राउंड तो होना चाहिए। मतलब ऐसे तो ठीक है, आइडियोलॉजी, सपोर्ट दैट आइडियोलॉजी विद द फैक्ट, एंड देयर इज अ फैक्ट इन द वर्ल्ड।
इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कैपिटलिस्ट को, क्या ब्लेम कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी बढ़ गई है सोसाइटी के अंदर। यही है ग्राउंड, यही है। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट कहाँ है? ये तो तुम क्लेम कर रहे हो, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट कहाँ है? हाँ, अरे वो है, उसका ग्राउंड दो कि ऐसे नहीं होना चाहिए, इसका ग्राउंड दो। दिस शुड नॉट हैपन। एनीबडी वांट टू ट्राई? थोड़ा सोचो, 2 मिनट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तुम्हें भी समझ में आएगा, बाहर निकलोगे तो मालूम पड़ेगा। स्टेप आउट ऑन द रोड तो समझ में आया। अभी तुम्हें समझ में आया सैलरी इज एन एक्सप्लॉयटेशन? अब मत करना। गुड। You also cannot exploit. So what you will do? You cannot get exploited, and you also will not exploit others. नहीं, मतलब you will exploit. ठीक है, कुछ सोचो। क्या मार्केट? इन व्हाट सेंस? हाँ, मतलब क्यों नहीं चाहिए, क्यों इक्वालिटी चाहिए? इनइक्वालिटी आ गई है, ठीक है, उसमें स्टेट का रोल है। एक्चुअली ना, दे ड्रॉ देयर एंटायर इंस्पिरेशन एंड एंटायर आर्गुमेंट, इन सब का, इसका भी और मार्क्स का भी, इन सब का एंटायर आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन मार्क्स वाज एक्चुअली हिस्ट्री स्टूडेंट, ठीक है। मार्क्स हिस्ट्री स्टूडेंट था, उससे वो पॉलिटिकल थिंकर बन गया, ठीक है। प्रिमिटिव सोसाइटी समझते हो? इगैलिटेरियन सोसाइटी, सब बराबर थे। अभी समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं कि सब बराबर थे, कुछ लोगों ने कंस्पिरेसी किया, किसके साथ में मिलके? स्टेट के साथ। जब हमने स्टेट बनाया, जब तक स्टेट नहीं था जब तक ही थी, अभी बताते हैं, वेलकम टू दैट। कुछ जब स्टेट बनाया हमने, ठीक है, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बनाई टू गवर्न द पीपल, तो कुछ लोगों ने कंस्पिरेसी किया, स्टेट के साथ मिल गए, और दे हैव क्रिएटेड देयर एनॉर्मस वेल्थ एंड दे स्टार्टेड डिक्टेटिंग द सोसाइटी। लॉजिकल भी लगता है, लॉजिकल लगता है, नहीं लगता है? इसी के लिए मार्क्स अपनी थ्योरी को साइंटिफिक थ्योरी बोलता था, हालांकि गलत नहीं है। दैट इज द रीजन मार्क्स वाज सेड अ गॉड हु फेल्ड। मार्क्स के बारे में कहा जाता है अ गॉड हु फेल्ड, ठीक है। अभी समझ में आया? नींद आई है? वेरी गुड। इगैलिटेरियन सोसाइटी में सभी इक्वल। प्रिमिटिव सोसाइटी है, वॉन्डरर और उससे आप हंटर और गैदरर से आप निकल के एक सेटल लाइफ शुरू करते हैं, विलेज लाइफ, उसे प्रिमिटिव सोसाइटी कहते हैं। तो वहां पे कौन अमीर और कौन गरीब है? कोई अमीर कोई गरीब है? सब तो बराबर, एक सब एक साथ सेटल हो रहे हैं, सबको इक्वालिटी। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसके बाद में what they are telling, after this some small group of people, smart enough, cunning person, ठीक है, they have used the state for their benefit, ठीक है, they have। इसी के लिए मार्क्स कहता था स्टेट को, पता है क्या स्टेट के लिए क्या कहता था? स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ बोर्जुआ क्लास। मतलब स्टेट की इतनी भी इज्जत नहीं थी। एग्जीक्यूटिव एजेंसी का मतलब समझते हो? द वन हु गेट द ऑर्डर फ्रॉम द टॉप एंड जस्ट टू इम्प्लीमेंट इट। इसी के लिए मार्क्स कहता था इट इज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ बोर्जुआ क्लास। यू नो बोर्जुआ? There is two. Marx has divided the entire society into two classes. The capitalist society, yeah? One is a bourgeois class, second is a proletariat class. Bourgeois class is a rich class, the owner, the capitalist class, and the proletariat is a working class, ठीक है, जो काम कर रहे हैं। अभी सुनो, अभी लिखो, ठीक है, ओके। This is the main argument of BOUR, ऐसे लिखो, डिफिकल्ट है उसकी स्पेलिंग,
GIO, if I'm not wrong, एक मिनट, 1 second, BORGIOESE, check, is it correct? बोर्जुआ, ये फ्रेंच है, दिमाग मत दो, खाली लिख लो, चेक करो, करेक्ट है, बोर्जुआ. सेकंड इज प्रोलिटारिएट. मेरे ख्याल से करेक्ट होना चाहिए. GE GE है, चेक किया. हाँ सर, GEOIS है. GEOIS. BO UR GEO. IS. अच्छा, IS, E आएगा लास्ट में, ISE बोल दो. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है. किसकी, कहाँ पे है मतलब, मैंने कहाँ से पढ़ी? ऑप्शन है BORGEOISE. ई उनका है, बोर्जुआ. ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो? तुम मत पढ़ो, जितना पढ़ा रहे हो उतने काफी है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं. ठीक है, कहीं मिला, यू रीड पॉलिटिकल थियरी की 11th की एनसीईआरटी पढ़ो, वही काफी है. ठीक है, अब मैं उससे ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन वहां से कर लेना. ओके, द एंटायर आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिमिटिव सोसाइटी. ठीक है, नाउ व्हाट मार्क्स, अभी समझ में आया कि सोशलिस्ट क्या कह रहे हैं. ठीक है, अब मार्क्स आएगा, मार्क्स कुछ और कहेगा. मार्क्स वाज एक्चुअली अ क्रिटिक. Actually, Marx was critique of everything, and he was right for himself. Marx क्या करता था पता है? छुप के निकलता था घर से बाहर. मार्क्स, हाँ, क्यों? इतने कर्जदार थे ना उसके तो पूछो मत. ठीक है, इतना लोन लिया था ना उसने कि बस यू डोंट आस्क. इसलिए पर्सनल लाइफ मार्क्स की बहुत बेकार थी. ठीक है, डिवोर्स भी हो चुका था, 4 बच्चे थे, एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी वाइल ट्रैवलिंग. ठीक है, तो मार्क्स वाज हैविंग अ वेरी पेनफुल स्टोरी. बस मार्क्स वाज अ पर्सन हु हैज एक्चुअली डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू परमानेंटली. अब वर्ल्ड वापस एक नहीं होगा, दिस विल रिमेन टू. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा होने आ जाए. ठीक है, बट यू नीड मार्क्सिज्म. व्हाई? नहीं, so that the capitalists do not turn into animal. कैपिटलिस्ट एनिमलिज्म में नहीं टर्न हो जाए. एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है उनके पास में, एक्सप्लॉयटेशन की. ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जरूरी है. ओके, देन मार्क्स विल कम. ओके, व्हाट ही विल से, ही क्रिटिसाइज सोशलिज्म. ठीक है, he criticized capitalism. What he suggests? He suggests about communism, which is similar to primitive society. ठीक है, similar to primitive society. Okay, उसने communism की बात की. And what he says that to bring communism, we have to bring first. To bring communism, we have to bring first सोशलिज्म. ओके, हमें पहले सोशलिज्म लाना पड़ेगा, लेकिन इसका सोशलिज्म इससे डिफरेंट है. हाउ? दिस सोशलिज्म सेज दैट ओनली इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए स्टेट के पास में. इसके सोशलिज्म में क्या होगा? ऑल. ओके, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन
all means of production should be with the state. ठीक है? And ultimately the state, what a state will do, the state will distribute पहला, and state will bring the equality in the society. ठीक है? स्टेट के पास दे दो means of production with the state will bring equality and okay, equality in the society by creating two methods. One is distribution of resources, equal distribution of resources, पहला, and equality of opportunity. ठीक है? इक्वली बढ़ता है. You do your job. एक्चुअली में उनका कंसर्न ये है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना सोसाइटी में, ठीक है, डोंट गो सो मच डीप, एक रुपये से ध्यान रखो खाली. उनका कहना ये है जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना सोसाइटी में, कैटेगराइजेशन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, दैट इज अ स्वीपर, झाड़ू मारने वाला, इज इक्विवेलेंट टू कलेक्टर. दोनों जॉब है, स्वीपर भी एक जॉब है, कलेक्टर भी एक जॉब है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दोनों जॉब है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का पे भी इक्वल है. वही है, वही परफेक्ट सोसाइटी. ओ इज करेक्ट, व्हाटएवर ही इज सेइंग इज करेक्ट एक्चुअली. ठीक है, डोंट गेट इनटू दैट, डोंट डू दैट. Whatever he is saying is actually correct. Okay, he is talking about very important element, is that is freedom. Okay, freedom. I am okay. You want to do a job, collector. Who dictated you to do the job? Anybody influenced you? Isn't influence किया? It is impossible that you are not influenced. You're telling not influence? How come not influence? क्यों करना है जॉब? तुम्हें अपने अंदर चेंज लाने के लिए कलेक्टर बनने की क्या जरूरत है? क्यों चेंज करना चाहते हो सोसाइटी? गलत है सोसाइटी? किसने कहा? कौन डिफाइन किया गलत और सही? Who decide that moral, that is right and wrong? You. Who are you? You are element of society. You are not society. You try and understand. I'm not criticizing you. This is what Marx is telling. If there is 10 people with the same caliber, ठीक है, same caliber, to be a football player, but there is a post of only for 4 people. What about the other 4? Other 6. Okay. What about the other 6? What they will do? So Marx says that freedom में Marx कह रहा है कि do whatever you want to do. There is no categorization. You do a doctor, you become an engineer, rather than opting a arts or commerce. You opt art and commerce. Why? Because your grade is less. Then only you adopt the arts and commerce. Otherwise, what you will adopt? Medical, engineering. ऐसे कुछ adopt करोगे? Who dictated that? क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी है, उसके पे अच्छे हैं, सोसाइटल स्टेटस अच्छी है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है. Actually, he is against this thing only. ऐसा या don't go into that particular area. हाँ, तभी वो कम्युनिस्ट, इसी के लिए कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात कर रहा है. वो आइडियल सोसाइटी है, प्रैक्टिकल है ही नहीं वो. ठीक है, दैट इज द रीजन ही इज द गॉड
who failed. ठीक है, don't go too much deep into that, खाली समझने की कोशिश करो. He is bringing state. Now this Marx says that we need to achieve capitalist society, a communist society. Okay, so we have to bring socialism, the socialist state, and he gives all the means of production to the state. Okay, जितना भी means of, मतलब अगर सारे means of production state को दे दोगे तो बचेगा क्या यहाँ पे? There is no right to ownership. ठीक है, कोई राइट नहीं है किसका? ओनरशिप का. ओनरशिप मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी का कोई राइट टू प्रॉपर्टी है ही नहीं. प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग. ठीक है, ओके, गेटिंग? सो व्हाट ही सेज, डू दिस. ठीक है, व्हेन यू अचीव द इक्वालिटी इन द सोसाइटी, जब सोसाइटी में इक्वालिटी आप अचीव कर लो बाय डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे करके, सब कुछ दे करके. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज बेसिकली मोर लाइक अ, ये लिबरल और कैपिटलिस्ट का है एक्चुअली. ठीक है, ज्यादा इससे एम्फसाइज इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, रीजन है उसका, मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में भी दिया जाता है. ठीक है, तो यू डू दैट व्हेन यू अचीव द इक्वालिटी. ठीक है, देन यू अबॉलिश द स्टेट. व्हाट यू डू, यू अबॉलिश स्टेट. अब क्या करो तुम, स्टेट अबॉलिश कर दो, तो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी यू विल हैव? कम्युनिस्ट में आपने स्टेट अबॉलिश कर दिया तो सोशलिज्म खत्म हो गया प्रिंसिपल. स्टेट अबॉलिश किया तो सोसाइटी कैसी हो गई आपकी? स्टेट लेस सोसाइटी बन गई आपकी. स्टेट जब अबॉलिश करें आप तो क्या बना? ओके, स्टेटलेस सोसाइटी. किसको कंफ्यूजन है? समझ में आ गया कैपिटलिस्ट क्या कह रहा है? सो वेयर इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडिया वाज हियर. इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास था? स्टेट के पास था. इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड सोशलिज्म, नॉट मार्क्सिज्म. India has never implemented Marxism. Practical. Okay. Actually, there is many variant of socialism. Socialism के क्या है? बहुत सारे वैरायटी हैं. सिंडिकेट सोशलिज्म है, फेबियन सोशलिज्म है. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के सोशलिज्म है. जर्मन का अलग सोशलिज्म है, फ्रेंच का अलग है. एक्चुअली नेहरू बिलोंग फ्रॉम अ फेबियन सोशलिज्म. ठीक है, because Nehru's teacher was actually the originator of Fabian socialism. Don't get into that, all that stuff. Okay, understood कि socialism की बात हो रही थी. We'll start Gandhi on this socialism. ठीक है, कोई confusion है इसको? अभी समझ में आ गया कैपिटलिज्म क्या, मार्क्सिज्म क्या, कैपिटलिज्म क्या. ठीक है, सोशलिज्म. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.